इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे या परसों के टेस्ट में कोई डाउट्स थे? एक क्वेश्चन जो मैंने यीस्ट वाला करवाया था, मैंने उसमें बताया था ना, देखो मैंने बच्चा आपको बोला सपोज करो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आपको दे, ये क्वेश्चन हर बार आप, आपको उस दिन डाउट था ना, वो मैं सॉल्व करवा दूं। डाउट जरूर क्लियर होना चाहिए। आंसर अब यहाँ पे हमारे पास तो आंसर है, क्योंकि जिंगो बाइलोबा इज द ओनली लिविंग फॉसिल इन द, ये हमारे पास प्राची टेस्ट नहीं दिया सैटरडे, जिस दिन नीट का पेपर होगा फिगर होगा आप देने मत जाना, नीट सारी 2 साल की मेहनत को ना कुएं में डाल वही चले। आपका कोई मैसेज आया था मुझे कि मेरे को ऑनलाइन भेज दो टेस्ट, आया कोई मैसेज? तो मानसी ये देखो लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास जिंगो बाइलोबा जो है दैट इज द मेन लिविंग फॉसिल, साइकस इज आल्सो, अब साइकस इज आल्सो, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी है, ऑल ऑफ दीज आ गया। अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पे सपोज करो जिंगो बाइलोबा नहीं, ठीक है, तो इसकी जगह पे कोई और ऑप्शन लिखी हुई है, पर साइकस हमारे पास आ गया, तो साइकस नंबर 1 पे जिंगो है जहां भी। अगर हमारे पास यहाँ पे जिंगो आ गया, फिर साइकस आ गया, फिर नीटम आ गया, फिर पाइनस आ गया, तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बेबी मैम ने तो कहा था जिंगो और साइकस, साइकस इज आल्सो, हाँ इसको आल्सो मिलेगा, तो यहाँ पे बम क्या बढ़ गया, जिंगो। अब सपोज करो यहाँ पे जिंगो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई और जिम्नोस्पर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, साइकस। क्योंकि इन चीजों पे आपने स्ट्रेस जरूर करनी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये समझ आ गया, माने समझ आया संजीवनी, जतिन, ठीक है, क्योंकि इन चीजों पे स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है। आंसर की आपको मिल गई थी उस दिन विद सॉल्यूशंस, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में भी डाउट हुआ मस्ट क्लियर फ्रॉम मी कि ये डाउट, वो मैं करवा दूं, ठीक है बच्चों, मैं देख के सारा आपके पास क्लास के बाद आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा पक्का। तो हमारे पास अब आज का टॉपिक है, इस वीक का जो सैटरडे को टेस्ट है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो बच्चे आपने मॉर्फोलॉजी तक कर लिया, इस वीक हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेल, सेल साइकिल एंड डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स एंड फोटोसिंथेसिस, ये हमने चैप्टर कंप्लीट करने जिसका अगले सैटरडे को टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है, मैंने क्या बोला, बायो में फादर्स एंड फादर्स आर एवरीवेयर। तो पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, आंसर बोलो, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, आंसर इज एन ग्रू, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एन भी लिखा ग्रू पहला लिखा तो भी चलते, एन ग्रू is known as father of plant anatomy. Test will be on Saturday. Saturday, हर सैटरडे को था,
सिलेबस नहीं कंप्लीट हो, 5 मैं आपसे बात कर लूंगी। आपका टेस्ट बायो का सैटरडे है, आपके टेस्ट में कोई चेंज देख लेते हैं, आपसे बात करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ड्यूरेबल गुड, मोस्ट ड्यूरेबल गुड। अब ये जिम्नोस्पर्म नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म। Most durable wood, that is teak, Tectona grandis। अगर मोस्ट ड्यूरेबल वुड जिम्नोस्पर्म्स की आई तो सिट्रस देवदार, देवदार मैंने उस दिन बताया था। मोस्ट ड्यूरेबल वुड दैट इज टीक, टीक की लकड़ी आती है टेक्टोना ग्रैंडिस। मोस्ट ड्यूरेबल वुड दैट इज टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस। उसके बाद who coined the term tissues, क्योंकि अब एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर करना है। who coined the term tissues? Hartwig। Answer is Hartwig। फिर आ गया हमारे पास name the tissue that is enclosed between two epidermal layers of leaf। Name the tissue that is enclosed between the two epidermal tissues of leaf। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? मानसवी, मीजोफिल, दैट इज मीजोफिल। देखो बच्चा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीजोफिल। नेम द वर्ड that is used in making hockey sticks। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द वर्ड दैट इज यूज्ड इन मेकिंग हॉकी स्टिक्स। और हमारे जलंधर में संसारपुर एक ऐसा विलेज है जहां से हर घर से हॉकी का प्लेयर जो है उसका जन्म होता है। और संसारपुर के हर घर में जो है ये ट्री उनके कोर्ट यार्ड में लगा होता है। ये बच्चों को उनका ये होता है कि इस विलेज से हर एक बच्चा जो है वो प्लेयर निकलता है, हर एक बच्चा। तो बताओ बच्चा, कौन से ट्री की जो वुड है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हॉकी स्टिक? मलबेरी, शहतूत। शहतूत जो है जिसमें तूतियां लगती हैं, शहतूत लगते हैं, मलबेरी। इसकी वुड जो है उससे स्टिक बनती है हॉकी की। और संसारपुर के हर घर के कोर्टयार्ड में ये लगाया जाता है। नेक्स्ट, which tissue is known as living mechanical tissue? Please underline it। which tissue is known as living mechanical tissue? कौन सा टिश्यू जो है जिसको लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहा जाता है? बच्चा दिन बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी, सिर्फ पढ़ने वाले दिन है, अब कुछ। और मुझे ये भी पता है मेरे पेरेंट्स की फीडबैक आती है कौन कौन सा। आंसर इज कॉलन काइमा। Answer is collenchyma। Collenchyma is the living mechanical tissue। Next, what
टाइलोसिस, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, टाइलोसिस क्या होते हैं? What are टाइलोसिस? टाइलोसिस बच्चा हमारे पास जो है, ये पेरेंकाइमा की इनग्रोथ्स होती, ठीक है बच्चा, और ये जो है वो ल्यूमन कैविटी में पाई जाती है, उसको इनग्रोथ। तो टाइलोसिस आर इनग्रोथ्स ऑफ, यहाँ पे ना लिखो सोना, पेज ले लो, पेज पे लिखोगे क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आता। टाइलोसिस आर इनग्रोथ्स present in the lumen of vessels, present in the lumen of vessels, and they are made up of parenchymatous tissue, and they are made up of parenchymatous tissue. अगला क्वेश्चन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर बंडल, क्योंकि वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम कैम्बियम का बना होता है बच्चा, ऑलरेडी आपको पता है। ए वेस्कुलर बंडल in which cambium is absent, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट होता है कैम्बियम, जो सेकेंडरी ग्रोथ में रोल प्ले करता है। A vascular bundle in which cambium is absent is called as, उसको कौन सा वेस्कुलर बंडल कहा जाता है? जिस वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम जो है, जो सेकेंडरी ग्रोथ में रोल प्ले करता है, अगर वो एब्सेंट है तो उस वेस्कुलर बंडल को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम ही नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं हो रही। दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट इज, व्हाट इज conjunctive tissue? CONJUCTIVE. What is conjunctive tissue? और कंजक्टिव टिश्यू जो है, ये हमारे पास रूट्स में प्रेजेंट होता है, और रूट्स भी कहां पे प्रेजेंट होता है? इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन रूट्स between xylem and phloem bundles, between xylem and phloem bundles, and this tissue is made up of, and this tissue is made up of parenchyma. This tissue is made up of parenchyma. अब हम बात करते हैं हमारे पास टिश्यू की, तो हम बात करते हैं जो हमारे पास प्लांट टिश्यूज है, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से बच्चा? एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू एक है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा है परमानेंट। So we have two types of plant tissues. Meristematic tissue जो है, it is derived from the Greek word meristem. Meristem means divisible, जो आगे डिवाइड कर जाए। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मेनली टिप पे प्रेजेंट होता है। आप देखते हो एपिकल मेरिस्टेम आता है हमारे पास, इंटरकेलरी मेरिस्टेम आता है, लेटरल मेरिस्टेम आता है। So meristem is derived from the Greek word
that means divisible, and the cells of meristematic tissue are always thin walled. कभी भी thick walled नहीं होते. Cells of meristematic tissues are always thin walled. And the term meristem was first of all given by, and the term meristem was first of all given by Nageli in the year 1858. बच्चा छोटी छोटी terms हैं, but they are very valuable for you. जो meristematic tissue है, it is classified on the basis of origin, position, function, origin, position, function, and plane of division. And plane of division. अब अगर पोजीशन के हिसाब से चलते हैं, आपने ये वाला डायग्राम जो है वो +1 में सब बच्चों ने बनाया हुआ है हमारे पास. On the basis of position, meristematic tissue is of 3 types. Apical meristematic tissue और apical meristem. फिर हमारे पास आ गई intercalary meristem. Then we have lateral meristem. Apical meristem, intercalary meristem, we have lateral meristem. Apical meristem is always present at the growing apex of stem and roots. Apical meristem is located at the growing apex of stem and roots. Whereas intercalary meristem जो है वो internodes और nodes की basis पे होगी. Whereas intercalary meristem is present at the basis of internodes, and lateral meristem is present, on the lateral sides of roots and stem. उसके बाद हमारे पास आ गया शूट एपेक्स. अब जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. There are 3 theories related with the shoot apical meristem. 3 theories हमारे पास आती हैं. First is apical cell theory. Second is histogen theory. And third is very important. इसके क्वेश्चन हर बार ही आता है. Third is tunica corpus theory. Third is tunica corpus theory. जो apical cell theory है, first of all given by this Nageli in the year 1858. इसने term meristem दी. Apical cell theory first of all given by Nageli in the year 1858. और जो बच्चा मजेदार बात क्या है, जो एक एपिकल सेल थ्योरी है
that is valid only for algae, bryophytes and some pteridophytes, but never for gymnosperms and angiosperms. This theory is applicable for algae, bryophytes. मनस्वी आपने अगर पिछला भी कुछ करना होगा ना जो पहला यूनिट है मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देके डोंट वरी अबाउट मेरे पास आप एक्स्ट्रा बैठ के इसको कंप्लीट करें आप भी so it is applicable for algae, bryophytes and some pteridophytes but never for gymnosperms and angiosperms क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स अब एक्सप्लेनेशन है क्यों क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न विद सिंगल एपिकल सेल मल्टीपल आ रहे हैं उसमें बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न विद सिंगल एपिकल सेल अब उसके बाद आ गई हिस्टोजन थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय हैंस्टीन इन द ईयर 1870 first of all given by Hanstein in the year 1870 and it is made up of three distinct meristematic zones तभी उन zones को हिस्टोजन्स कहा जाता है it is made up of three distinct meristematic zones और तीनों डिस्टिंक्ट मेरिस्टेमेटिक जोन्स को क्या कहा जाता है हिस्टोजन्स और ये तीनों जो हमारे पास तीनों जोन्स आ रहे हैं कौन कौन से फर्स्ट इज डर्मेटोजन सेकेंड इज पेरिग्लैम दिमाग में आना शुरू हो गया ठीक पड़ा है क्या डर्मेटोजन पेरिग्लम एंड प्लीरोम डर्मेटोजन पेरिग्लम एंड प्लीरोम जो डर्मेटोजन है डर्मा तो आउटर मोस्ट स्किन दैट इज एपिडर्मिस डर्मेटोजन फॉर्म्स एपिडर्मिस और जो पेरिग्लम है इट फॉर्म्स कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस पेरिग्लम इट फॉर्म्स कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस और जो प्लीरोम है इट इज द सेंट्रल कोर जोन बिल्कुल सेंटर में और ये क्या बनाता है पिथ एंड वेस्कुलर टिश्यूज इट फॉर्म्स पिथ एंड वेस्कुलर टिश्यूज उसके बाद हमारे पास आती ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी सबसे वैलिड है given by Schmidt in the year 1924 कहीं 1923 भी लिखा हुआ then it is also right Schmidt 1924 तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है Schmidt 1924 ट्यूनिका सेल्स जो ट्यूनिका मींस ट्यूनिक आउटरमोस्ट कवरिंग जो स्किन लाइक आउटग्रोथ है ट्यूनिका cells are very small in size whereas corpus cells are larger in size and these cells जो ट्यूनिका corpus cells हैं these cells they form primary xylem primary phloem primary phloem ground meristem cortex एंडोडर्मिस पिथ एंड पेरिसाइकल तो सबसे जो वैलिड थ्योरी होगी वो कौन सी है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी
ये थे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आगे परमानेंट टिश्यू। तीन तरह के हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, secretory. सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, secretory. अब जो सिंपल है दैट इज पेरेंकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। अब जो पेरेंकाइमेटस टिश्यू है याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो डेपोजिशन इसकी, पेरेंकाइमेटस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। It is further of many types. जो पेरेंकाइमा सबसे important, it is made up of many types like aerenchyma, chlorenchyma, aerenchyma, chlorenchyma, xylem parenchyma, phloem parenchyma, aerenchyma, chlorenchyma, xylem parenchyma and phloem parenchyma. अब हमारे पास क्वेश्चन, जो एरेंकाइमा है, it is found in all the hydrophytic plants. It is found in all the hydrophytic plants. And the most important example is, marine members of brown algae. जैसे फ्यूकस सरगासम है, ये 60-60 फीट लंबे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ब्लैक बोर्ड पे कर लेती हूँ, फ्यूकस सरगासम। इनकी जो हाइट है और इनकी जो लेंथ है ये 60-60 फीट लंबे है। पर इनमें क्या है, इनमें जो है एयर वेसिकल्स आर प्रेजेंट फॉर मेंटेन द बायोन्सी। इनमें एयर वेसिकल्स प्रेजेंट है जो एरेंकाइमा टिश्यू है, to maintain their buoyancy. उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर पीडियोब्लास्ट, वो भी एरेंकाइमा का पार्ट है, बहुत बार आता है। व्हाट आर पीडियोब्लास्ट? ये नॉन ग्रीन लार्ज सेल्स होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होते। दे आर नॉन ग्रीन लार्ज सेल्स which contains tannins, जो इसमें टैनिन पिगमेंट्स होते हैं, which contain tannins and crystals. Which contain tannins and crystals. अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नेम द
मेंबर ऑफ फैमिली लेगुमिनोसी। मानसवी हमारे पास जो लेगुमिनोसी है ये पी फैमिली है, मैंने इनको करवाई हुई है, ये पी फैमिली है। सब फैमिलीज में पेपिडियोनेसी आती है और ये पल्सिस की फैमिली है, हमारी जितनी दालें आती है। और ये डाइकॉट फैमिली जिसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेम द मेंबर ऑफ फैमिली लेगुमिनोसी। Let's start with the question. And second most important. Name the member of family Leguminosae in which idioblasts are present. In which idioblasts are present in abundance. In which idioblasts are present in abundance. Leguminosae का member बहुत ही लेगुमिनोसी का पहले मैंने बताया कि इडियोब्लास्ट जो है टैनिन्स एंड क्रिस्टल्स के साथ रिलेटेड है। ये लेगुमिनोसी का मेंबर है जिसमें बहुत ज्यादा बेअंत हमारे पास इडियोब्लास्ट प्रेजेंट है। कुछ याद नहीं? मानसवी आपको पता हो, संजीवनी, मान्या, शांत, ये स्माइल बहुत अच्छी है। लैगुमिनस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, इनमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें पिंक पिगमेंट आती है, लेग हीमोग्लोबिन। पर सब में नहीं होता ये, सिर्फ हमारे पास इसमें जो पी प्लांट पाइसम स्टाइलम है या मैडिकैगोस्टाइलम मेथी है। तो इसके साथ आपका एक बचपन का एड, जब आप छोटे थे तब आपको मोबाइल का इतना नहीं पता होता था। एड आते थे टीवी में, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, ठीक है ना, नीम, इंडिगो डाई, दैट इज इंडिगो पीरा टिंट एरिया, अब आपने देखा ना इंडिगो के जो प्लेन जहाज है उनका भी नीला रंग होता है। तो इंडिगो पीरा टिंट एरिया commonly called as indigo, नील। अब तो ऐसा कुछ यूज नहीं होता। पहले घर में अभी भी आप देखोगे, अगर आपके दादी नानी दादा जो भी घर पे हैं, जब वो अपने सफेद अंडरगारमेंट्स को धोते हैं वो नील के पानी में भिगो के थोड़ी देर बाद फिर वो सूखने डालते हैं कि उन पे कोई भी मैल वगैरह नजर ना आए, वो साफ हो। तो इंडिगो। उसके बाद हमारे पास पेरेंट काइमा के बाद आता है कॉलन काइमा। क्लोरल काइमा जो है दैट इज रिलेटेड विद क्लोरोफिल टिश्यू, ठीक है। और जो क्लोरोफिल टिश्यू है उसमें क्या है, हमारे पास सारे मेंबर्स आते हैं, स्पेशली द मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी। अब उसके बाद क्लोरल काइमा के बाद आता है स्क्लेरल काइमा। It is made up of lignin. It is made up of lignin. Parenchyma is made up of 2 types. एक आते हैं स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स, एक स्क्लेरीन्स। Parenchyma fibers, second are sclerines. Parenchyma fibers, they are very thick, present in the hypodermis, epidermis के नीचे वाली लेयर में। They are very thick, present in hypodermis, पेरिसाइकल, जो उसकी पेरिफेरी पे सारा है पेरिसाइकल,
primary xylem and primary phloem. Where excavates, they are small, thick-walled dead cells. Please underline it. They are dead cells. और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? They are found in the hard parts of the plant. They are found in the hard parts of the plant. और जो spheroids है, they are further of 5 types. First are brachyspheroids. First are brachyspheroids. बच्चा कई बार ब्रैकिस्क्लेराइड नहीं लिखा तो इनको स्टोन सेल्स कहा जाता है. They are also called as stone cells. अब आप देखते हो एप्पल का अंदर वाला पार्ट जब काटते थोड़ा हार्ड होता है, पियर का हार्ड होता है, थैलमस के आसपास हार्ड होता है, तो ये वहां पे पाए जाते हैं. एग्जांपल इज पियर, एप्पल एंड गुआवा. थैलमस को सराउंड किया. Pear, apple, guava. Even in the pulp of fruits also. Even in the pulp of fruits also. Second are macrospheroids. Second are macrospheroids. They are found on the outer seed coat of pulses. दालों की बाहर वाली कवरिंग. Found in the outer seed coat of pulses. Third are osteospheroids. Third are osteoscleroids. Osteo word, that means bone-like haddi. They are bone-like with swollen ends. They are bone-like with swollen ends. जो इसके दोनों ends है जैसे वो swell कितने हैं तो वो ये लगता है कि जैसे हड्डी like है. ठीक है बच्चा. Example is rubber plant. मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था फैमिलीज में कि रबर प्लांट जिसमें न्यूटर सेक्स ऑर्गन होते हैं. याद आया माना संजीवनी जतिन कि न्यूटर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और यू फॉर्बिएसी फैमिली का. तो एग्जांपल इज रबर प्लांट. उसके बाद आ गया एस्टर स्क्लेरीन्स. फोर्थ इज एस्टर मींस स्टार शेप. Fourth is asterospheroids. They are star shaped. And found in the leaves of hydrophytic plants. Common example is water lily. Found in the leaves of hydrophytic plants. Well known example is water lily. And the last one is filiform scleroids. और बच्चा याद रखना they are trichome. Trichome means hair like. आप उसमें सच बताना कि पहले ये कुछ पढ़ा फिर जब आप नीट का पेपर देते हो ना पहली बार. ये गलत बात होती है कि फर्स्ट टाइम ट्राई देके देखते हैं कि कैसे. जो चीज आपको फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट.
जो पहली बार आपके साथ आपको, आप कई बार देखते हो मार्केट जाते हो, कोई कपड़ा डमी पे पड़ा होता है, आप उसको उठा लो, और बाकी कितने देखते हो, पर जो आपने फर्स्ट देखा होता है वो। तो नीट को आप इसको ये नहीं कि हमने इसको ट्राई करके या फर्स्ट टाइम दे के देखते हैं, वो अभी दे लोगे मेहनत करके ठीक है, नहीं तो अगला एक साल बहुत डिप्रेशन, आपके पास पूरा साल पढ़ने के लिए भी आप लोगे वही किताबें जो +1 में पढ़ी, फिर +2 पढ़ी, फिर अभी पढ़ा, तो 3 साल को दोबारा पढ़ने की जगह पे आप अभी जो एक महीना है इसमें अगर दिन रात मेहनत, मैंने फिर बोला है पूरा मई जुलाई अगस्त 4 महीने आपके पास ना टक्करे मारने के लिए भी जगह कम हो जाएगी। तो अभी एक महीना जो आप इसको अच्छी तरह से, जो 25 डेज है ये अच्छी तरह इसको so they are real life and they are found in the hydroponic plant Ishornia. That is commonly called as water hyacinth, और मैंने ऑलरेडी बताया है कि Ishornia is known as terror of Bengal. मैंने आपको पहले ये था हमारे पास सिंपल टिश्यू। अब हम बात करेंगे जो परमानेंट में सिंपल आया, अब हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जाइलम। That is xylem. Xylem is made up of tracheids, vessels. Xylem is made up of tracheids, vessels, xylem fibers, xylem fibers, and xylem parenchyma, जिसको गुड parenchyma कहते हैं. It is made up of tracheids, vessels, xylem fibers, and xylem parenchyma. That is also called as good parenchyma. जो tracheids है, they are dead. They are dead. Their cell wall is very thick. क्योंकि उसमें हार्ड डेपोजिशन लिग्निन की प्रेजेंट होती है। और जो वेसल्स है, they are in the form of very long tubes. Vessels, they are in the form of very long tubes. But these vessels are not present in. These vessels are not present in gymnosperms. जतिन फिर मेरी इंतु किंतु परंतु आ गई। These vessels are not present in gymnosperms, but they are only present in. But they are only present in one order of these gymnosperms, that is needles.
और नीटेस के एग्जाम्पल है नीटम एंड अफिड्रा। नीटेस, नीटम एंड अफिड्रा। Whereas in xylem fibers, तो wood fibers भी कहा जाता है। They are non-living. They are non-living. In which lumen is जो cavity है, tightly packed होते हैं, in which lumen is either very small or absent. Lumen is very small or absent. Whereas xylem parenchyma is living tissue. Xylem parenchyma is living tissue. It stores food. It stores food and help in translocation of water and minerals, even food also. And help in translocation of water and minerals, including food. उसके बाद आगे flowing, also called as lactone or bast fibers. Also called as lactone or bast fibers. Made up of phloem is also called as lactone or bast fibers. It is made up of 4 types of cells. It is made up of 4 types of cells. First are sieve cells, SIEV, जिनको sieve elements भी कहते हैं बच्चों. First are sieve cells. Second are companion cells. Companion cells. Third are phloem parenchyma. Third are phloem parenchyma. Fourth are phloem fibers. Fourth are phloem fibers. अब जो हमारे पास ये 3 सेल्स हैं, they are only found in gymnosperms. Please underline it. They are only found in gymnosperms and pteridophytes. Gymnosperms and pteridophytes. They are living cells. They are living cells. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जब ये सेल्स मैच्योर होते हैं तो दे आर विदाउट न्यूक्लियस. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी they are without nucleus and highly vacuolated cytoplasm is present in them. Highly vacuolated cytoplasm is present in them. फिर आता है companion cells. They are only present in the phloem of angiosperms. They are only present in the phloem of angiosperms. But, फिर but आ गया, but also present in one order of gymnosperms, that is Neetales, Netamorphidarum.
but also present in one order of gymnosperms, that is Nettles, Netum and Aplysia. फिर आ गया phloem parenchyma. Phloem parenchyma. It is always present in the phloem of dicots. It is always present in the phloem of dicots. And they mainly store food in them. फिर आ गया phloem fibers. They are non-living. They are non-living, highly lignified cells. Non-living, highly lignified cells. Example is जूट, जिसके ये रस्से बनते हैं. आप में तो अब वो रस्सियां वाला पार्ट नहीं आया, पहले बांध के जो मंजे होते थे जूट के, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है. तो हमने थर्ड वाला आप करना है सिंपल परमानेंट टिश्यू कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. थर्ड आर सिक्रीटरी सेल और सिक्रीटरी. They may be external or internal. जो external होंगे बच्चा वो epidermal in origin में होंगे. They may be external or internal. External, they are epidermal in origin. And they are further of four types. They are further of four types. First are glandular hairs. First are glandular hairs. Second are digestive glands. First are glandular hairs. Second are digestive glands. Third are nectaries, Nectaries. Nectaries. And fourth are hydatodes, Hydathodes. Hydathodes. Hydatodes. जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इनमें स्टिमुलेटिंग मटेरियल प्रेजेंट, ग्लैंडुलर हेयर्स है, ठीक है बच्चा. और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रीशन में हेल्प होती है. और जो नेक्ट्रीज हैं ये फ्लावर्स के बेस पे प्रेजेंट. और जो हाइडेथोड्स हैं दे आर नोन एज वाटर स्टोमेटा, जिससे माउथ से पानी बाहर मूव करता है. Hydatodes are known as water stomata and water released in liquid form. अब secretory tissues का दूसरा पार्ट इंटरनल वाला, एक्सटर्नल. Internal further of three types. First are secretory cells. First are secretory cells. Second are resin ducts, RESIN. Second are resin ducts. And third are lactiferous ducts. Third are lactiferous ducts. Secretory cells, they are in the form of oil cells
प्रेजेंट इन द ग्राउंड नट, मूंगफली में जो तेल है उसके कॉटिलेडन से उसके जो दाने, these are the oil cells present in the cotyledons of groundnut. Whereas raisin ducts, they are present in the gymnosperm pinus. And release raisins. Whereas lactiferous cells, they release the viscous fluid, thoda sticky. Viscous fluid, and it is either white or yellow in color. It is either white or yellow in color. और ये अगर व्हाइट कलर का होता है तो कैलोट्रोपिस अक में रिलीज होता है। अक का प्लांट होता है ना कैलोट्रोपिस, मैंने आपको करवाया हुआ है उसमें, जिसमें मैंने आपको बताया कि वुड फॉर्मेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी तो कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बैरियर्स आ जाते हैं। तो कैलोट्रोपिस अक में ये जो लैक्टिफेरस डक्ट के जो डिफिशिएंसी सीक्रेट हो रहा है, या तो ये विस्कस से हाथ को चिपकता है, या तो ये व्हाइट होता है, या ये हमारे पास ये कलर होता है कैलोट्रोपिस अक। अब मेरा क्वेश्चन है, नेम द प्लांट इन विच लेटेक्स इज कलरलेस। ये दो बोले व्हाइट और येलो, बट क्वेश्चन आगे, नेम द प्लांट इन विच लेटेक्स इज कलरलेस। लेटेक्स कलरलेस है, उस प्लांट का नाम बताओ। प्लांट का नाम बताओ जिसमें लेटेक्स कलरलेस। एग्जाम्पल इज मलबेरी, शहतूत, मोरस एल्बा। मोरस एल्बा, मलबेरी, शहतूत। उसके बाद हमारे पास आ गया टैक्स इन द ईयर 1975। लास्ट पार्ट आ गया फिर मैंने फिर शुरू करवा। टैक्स इन द ईयर 1975 divided three main tissues in plants. Divided three main tissues in plants. कौन से? First is epidermal tissue. Second is ground tissue. And third is vascular tissue. Epidermal, ground tissue, and epidermal tissue is made up of epidermis, and epidermal outgrowths. Epidermis as well as epidermal outgrowths. Whereas ground tissue is made up of cortex, pith, pericycle,
and medullary rays. And medullary rays. Whereas vascular tissue system, whereas vascular tissue system is made up of vascular bundles and these vascular bundles they may be open or closed. ओपन का मतलब जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो, then it is called as open. And example is all the dicot plants जिनमें two cotyledons है, whereas closed इसमें कैम्बियम is absent in between xylem and phloem. तो इसके एग्जाम्पल है मोनोकॉट स्टेम. तो बच्चा एक बात सारा रीड करो, मैंने अपनी तरफ से आपको जो है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा 1 घंटा लगा के समझा दिया. ये चीजें ही हैं जो आपके नीट के उसमें आई. क्या बच्चा आज आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की असाइनमेंट आई तो नहीं अभी सेकेंड आई भी. तो एक बार रीड कर लो और रीड करके आप मुझे बताओ, फिर मैं सेल के साथ शुरू कर. मनस्वी आपने देखा ये टिप्स जो आपने पढ़े आई हुई है आपको? सारी आ गई है. एनाटॉमी की आ गई है, फोटोसिंथेसिस आ गई, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल. एक बार बच्चे रीड करो. हमने बहुत कुछ किया आज जो एनाटॉमी में, और ये हमारे पास स्कोरिंग पॉइंट्स है. क्योंकि बहुत बार ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में से ट्यूनिका कॉर्पस का डायग्राम बना होता है, आपको लेबल करना होता है ट्यूनिका कहाँ है, कॉर्पस कहाँ, ये भी आ जाता है. फिर आपसे पूछा जाता है डायग्राम में ये थ्योरी कौन सी है. अब बताओ मनस्वी, घर बैठ के पढ़ाई हो जाती है, आप बुक में पढ़ ये पॉइंट्स जो आपने पढ़े, अब इनको घर जाके आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पास में रख के आप अपने आप क्वेश्चन करो और अपने डाउट्स सबने जरूर लेके एक बार सारा देख लो, फिर मैं सेल के साथ स्टार्ट. लेकिन हमारे पास कॉलन टाइम में जो है वो सेलुलोज भी आ जाता है, लिग्निन भी आ जाता है, एनी काइंड आ जाता है, उसमें कुछ भी आ सकता है. पर ये जो डेपोजिशन है ये सेल वॉल को थिक करता है. ठीक है बच्चा, जो डेपोजिशन है चाहे हम लोग मोस्टली प्लांट्स में कहते हैं इनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, लिग्निन होता है, सुबेरिन होता है, ये सारी टेक्निक्स जो है उस सेल वॉल को थिक करके रखती है, उसको ड्राउट एंड डेसिकेशन से बचाव. क्योंकि +1 आपने छोड़े हुए साल हो और आपके दिमाग से निकल गए, अब आप कर रहे हो ना तो रिपीट करने से सारा कुछ. जतिन कहीं भी डाउट हो जरूर पढ़ो, आप 5 मिनट्स लगा के एक बार सारा पढ़ लो, फिर मैं सेल पे चलूँ.
संजीवनी, कोई भी डाउट हुआ जरूर क्लियर करवाइए। मान्या, कोई डाउट हुआ, मानसवी, यतिन, प्राची, शांत, कोई भी डाउट है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी से प्लस वन में सेल में से बहुत मोनोकॉट्स है। मोनोकॉट स्टेम है उसकी एग्जांपल, जैसे हमारे पास मेज, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेज आपने प्लस वन में डायग्राम ड्रॉ किया, दैट इज एग्जांपल ऑफ दिस क्लोज्ड हमारे पास। और ओपन जितने डाइकॉट्स है, जैसे हमारे पास है लिएंथस एनोसेट, सनफ्लावर टीएस आपने किया हुआ है, वो उसकी एग्जांपल। एक पूरा टॉपिक हमने किया है, तो देखो कहीं कोई बहुत बार आता है फादर ऑफ प्लांट नाम, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, हु कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया डिस्कवर किसने किया, वो इम्पोर्टेंट। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, थ्री किंगडम किसने दी, फोर किंगडम किसने दी, ये सारे क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कितनी सिटिंग देती हो बच्चा घर में, कितनी सिटिंग देती हो? कोशिश किया करो कि रात को पढ़ने की, 12 टू रात को 12 बजे, आप 12-1 बजे शुरू करो और सुबह 4-5 बजे, दैट इज द बेस्ट। क्योंकि उस वक्त आपको ना भूख लगती, ना प्यास लगती है, ना कोई आज जाग रहा होता कि आपको बुलाए। और पढ़ने के लिए ना पैर जो है, टब में पानी डाल के उसमें पैर रख, नींद नहीं। ये पढ़ने बहुत बढ़िया है पढ़ाई करने में। अगर पढ़ना, थोड़ा सा छोटा टेबलो प्लास्टिक का, उसमें पानी रखा, उसमें पैर रखा, और आराम से बैठ के आप रात को 12-1 बजे से लेके सुबह आप 5-6 बजे तक भी पढ़ना, 5 बजे तक नींद पूरी हो जाती, कोई बात नहीं, 5 बजे से लेके 8 बजे तक की, नहीं तो 10 बजे से लेके आप 2 बजे तक पढ़ना। आपका एक बार ना आप पढ़ लोगे ना बच्चा, फिर अगले दिन उसको रिवाइज, दैट इज वेरी। अब मैं सेल पे चलूं थोड़ा सा। हाँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्लस।
अब मेरा क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ रहा है। अपना अपना हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अपनी अपनी बुक बंद कर दो, सब कुछ आपकी बुक इस वक्त मैं कॉपी खुली रहती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, नेम द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। नेम द स्मॉलेस्ट, स्मॉल इज स्मॉलेस्ट, नेम द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। अपना अपना आंसर दिमाग लगाओ। नेम द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। और इसका साइज है 0.001 माइक्रोन मीटर। क्या बात है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ इसको देख। नेम द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। तो मानसजी आपको पता है स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल? Yes, PPLO, mycoplasma. It is commonly called as joker of the plant kingdom. PPLO में निकलवाया था मॉन्ड्रा में, फ्लोरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO, फ्लोरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, joker of plant kingdom. Name the largest prokaryotic cell. अब बैक्टीरिया नहीं पूछ रही मैं, प्रोकैरियोटिक सेल है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया पूछती तो बेगिया डोआ कहते, पर लार्जेस्ट अब हम लोग सेल की बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, नहीं, लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक। एग वाला पार्ट तो फिर वो एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, ऑस्ट्रिच, वो तो हमारे पास ऑस्ट्रिच एग इज नॉट द ट्रू सेल बिकॉज इट डज फूड मटेरियल इन इट। जो ऑस्ट्रिच एग है दैट इज नॉट द ट्रू सेल। ये भी हमारे पास आता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि उसने रिजर्व मटेरियल्स में होता है। ऑस्ट्रिच एग जो है दैट इज एडिबल, ठीक है ना? So my question is, name the largest prokaryotic cell. अपना अपना आंसर एक बार देके देख कि क्या हो सकता है। Nerve cell is the longest, but that is not the prokaryotic cell. I am asking prokaryotes in which well-defined nucleus is absent. I am asking about prokaryotes, and my question is, name the largest prokaryotic cell. That is spirulina. मैंने आपको डायग्राम दिया था ना, ये देखो, that is edible. It is used in soups, ice creams. That is spirulina. 13 to 15 centimeter in size. Spirulina. 13 to 15 centimeter in size. Name, write down the size of human RBC. Human red blood corpuscle का size क्या है? Size of human RBC. Sure. 7 to 8 micron meter. अब आता है नेम द लॉन्गेस्ट नर्व सेल इन ह्यूमन, ठीक है?
सॉरी, हमारे पास है नेम द लॉन्गेस्ट cell in humans, that is nerve cell. It is 90 centimeter long. तभी तो इतने झूठ बोले जाते हैं इतने काम। It is 90 centimeter long, that is nerve cell. In which category its cellular structure is absent? In which category cellular structure is absent? Viruses don't have cellular structure. तभी तो इनमें मल्टीप्लिकेशन कितनी ज्यादा होती है। Viruses don't have cellular structure. Name the largest acellular. Name the largest acellular plant. Name the largest acellular plant. ये एल्गी का मेंबर है एसिटिबुलेरिया। ग्रीन एल्गी में आता है। Largest acellular plant. It is 10 centimeter long. Name the largest acellular animal. Answer is amoeba, 1 millimeter. That is amoeba, 1 millimeter. The branch of science, which deals with the study of cell, the branch of science which deals with the study of cell, including metabolic aspects, is called as cell biology. It is called as cell biology. Whereas the branch of science which deals with the study of cell, the branch of science which deals with the study of cell is called as cytology. Is called as cytology. Who observed cell for the first time? Who observed cell for the first time? बोलो 7th 8th से पढ़ते आ रहे बोलो रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक in the year 1665 from the piece of cork. Where cell organelle nucleus first of all discovered by Robert Brown. Newman Hook
was the first, Leeuwenhoek was the first who observed bacteria, protozoans, living cells, and yeast, in the simple microscope. All the animals and plants, are made of cell. All the animals and plants are made of cell, were first of all studied by Totroshed in the year 1824. Totroshed in the year 1824. बच्चा अगर हम न्यूक्लियस को लेके चलते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस न्यूक्लियस के हिसाब से हम सेल को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. There are 3 types of cells. There are 3 types of cells on the basis of presence of nucleus. On the basis of presence of nucleus. मनस्वी बोलो कौन कौन से 3 तरह के सेल्स होंगे? स्वीटी भाई आपको पता है? On the basis of presence of nucleus, there are 3 types of cells. आंसर आपको आता है, 100% आता है. One are prokaryotic cell, second are eukaryotic cell, third are mesokaryotic. आंसर आता था. Prokaryotic cell, eukaryotic cell, mesokaryotic. अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ना सेलुलोज कहां गया? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स, मेयोसिस, सब कुछ एब्सेंट है. इन प्रोकैरियोटिक, अरे नहीं, पेप्टिडोग्लाइकन. ये है आपका क्वेश्चन. अंडरलाइन इट, वेरी इंपॉर्टेंट. Cell wall is made up of peptidoglycan, and the respiratory enzymes, they are present, and the respiratory enzymes, they are present in the mesosome. अब नाम से देखना जब आप बैक्टीरिया का अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल बना, तो यहाँ पे आप एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनाते हो जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है, इसको मेसोसोम कहते हैं. यहाँ पे डीएनए नेकेड है क्या बच्चा? तो in case of prokaryotes, cell wall is made up of peptidoglycan, and the respiratory enzymes, they are present in the mesosome. And here DNA is naked. And here DNA is naked.
whereas in eukaryotic cells, अब मानसवी यहाँ पे आंसर आएगा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, cell wall is made up of cellulose, DNA is combined with histones, जो means amino acids है, DNA is combined with histones and it is double stranded, DS. Yes. Double stranded, क्योंकि histones के साथ combined, it is double stranded. Respiratory enzyme is present in mitochondria, that is powerhouse of cell, जहाँ पे ATP is known as the energy currency of cell. Respiratory enzyme is present in mitochondria, whereas in mesokaryotic cells, histone proteins are always absent in them. They lack histones and proteins. And the term mesokaryotic cell, first of all, described by Dodge, D-O-D-G-E. First of all, described by Dodge in the year 1984. ज़्यादा पुराना. इसके बाद आप लिखो कि हमारे पास जो सेल का साइज है, मीजो इन बिटवीन, जो हमारे पास प्रो और यू के बीच में जो मिडल वाला आता है, मीजोकैरियोन, मीजोकैरियोटिक, जो हमारे पास जिसमें न्यूक्लियस मिडल में प्रेजेंट. मीजो जो है वो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट है, मीजोडर्मिस. मीजोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस मिडल में प्रेजेंट है. मेरा बच्चा आगे लिखो, इन केस ऑफ this cell, the size of cell is always measured in micron. The size of cell is always measured in micron. In case of light microscope, size of cell is always measured in microns. In case of light microscope, whereas in compound microscope, it is measured in angstrom unit. Compound microscope, it is measured in angstrom unit. Whereas in stage microscope, whereas in stage microscope, it is measured in ocular. Stage microscope, it is measured in ocular. आज का टॉपिक आपका यहाँ पर, और आज अपने घर जाके असाइनमेंट सॉल्व ऑकुलर, आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और 45 क्वेश्चंस में से कोई डाउट हुआ आप वेडनेसडे को मेरे पास लेके आना, क्योंकि आपकी क्लास मेरे पास मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे है बच्चा. सो हम लोग अपने दिन को वेडनेसडे